ओके तो मैं अभी बताता हूँ कि आपने कैसे करना है इनेबल। लेट मी कीप दिस बैक। रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। रिस्टार्ट करके आपने दोबारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सी इफ यू कैन असाइन योर पोर्ट इन योर BIOS। ओके BIOS, सो दे सेंडिंग मी मैसेज बिकॉज आई वाज आस्किंग somebody online, but it's okay. I got it now. So let's restart my PC and I will show you. So in my system I'm using the Gigabyte Aorus B450. Let's restart and you have to press F2 with this system. Let me get closer. Okay, I'll keep pressing the F2. Okay, we are in the BIOS. So what you have to do here, go in the, so I was here, so this option right here, it was SATA, so it was like red. Okay, so if you select red, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने किया है AHSI। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरी जो पोर्ट है वो हार्ड ड्राइव है, वो भी इंस्टॉल मैंने की है 2 TB की। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये इनको आप इनेबल कर दें, जितनी भी आपने ऑप्शन लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से APU SATA पोर्ट 0 ये वाला था नॉट इंस्टॉल है। SATA 1 में जो है मैंने हार्ड ड्राइव जो है वो लगाई हुई है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ जो सारे ऑप्शन है बंद हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, आप जाएँ एग्जिट, सेव एंड दैट्स इट। तो ये जब तरीका करेंगे तो जब दोबारा आप जाएंगे उसी प्रोफाइल में और कंट्रोल पैनल में, वहाँ पे आपको जाके डिस्क मैनेजमेंट में आपको डिस्क को दे सकते हैं और वहाँ पे शो हो जाएगी। Now actually I'm gonna show you how you can when you install a new hard drive. As you can see, it's not showing here in the system. I just installed a new hard drive and it's not detecting here. So what you need to do is you need to go to control panel, go to an administrator tool, and then go to computer management, storage, disk management, and it's right here. So the new hard drive that I installed is showing in the black. You can change that color in the setting too, but to initiate that drive you need to click right click on it, new simple hard drive, next, set the amount that is showing you to set, just keep everything default, next, and then give it a name. So what I'm gonna give the name is I think we have CD. Okay, I'm gonna keep it as A, drive A. So we're gonna keep the default setting right here, which is whatever is showing you, and we're gonna go next. NTFS format, which is I think is good. Volume label. So we can name this hard drive also. So I'm gonna name it storage, because this is where I'm gonna just put all my data, videos and stuff. Hit next. Let me see what is enable file. Oh no, we don't need compression because there's plenty of space there. This is 2 TB hard drive. So press next, finish, and the hard drive is right here. It's right now formatting. Storage A, as you can see, it's showing here, and now I can go in the system and this is the space right here. So what happened is why actually it took me so long to figure that out, because in my system all the other hard drive option in the system, it was not on because I was not using. So what happened is if you're not using any of the system, let me on my camera right here. Okay, so what happened is if you are not using any of the other hard drives options, new system these days they just disable that option automatically, so you cannot use it. So when you install a new hard drive, you have to actually go to the BIOS setting and enable that option and enable all those ports to detect this hard drive. So I was like, I already spent like hours to do that. I'm making this video for you guys, so people who cannot see their hard drive even in this disk manager. So I'm doing this for you guys, so if you install a new hard drive you can easily do it. So you have to enable that option in the system. So what I was doing is I connect the hard drive, everything was working, hard drive was working, is spinning,
and it was not showing here. So I try many times. I go here, refresh, then I refresh like this, rescan disks. It still did not show. I restart many times, but I could not figure out how to enable the option. So guys, hopefully you guys enjoy the video. If it's helpful, do like and subscribe my channel for more videos. If you want to learn about the editing in Wondershare Filmora, do let me know in the comments below. I can also speak in Urdu, so let's make it that way. Let me turn on the slide. Is okay. So if you want to learn, let me close this. तो अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो मैंने जितना भी प्रोसेस किया है, मैं एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल है उनको समझ आ जाए। सो बेसिकली मैं गया हूँ कंट्रोल पैनल में, और फिर आप जाएं एडमिनिस्ट्रेटर टूल में। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, बेसिकली सम बंदों का इस तरह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं, व्यू बाय लार्ज आइकॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाएं, कंप्यूटर मैनेजमेंट, फिर जाएं स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव आपकी इनिशिएटेड नहीं होगी, जो अभी आपने रिसेंट इंस्टॉल किया है, उसकी जो ये बार है वो ब्लैक नज़र आएगी। उसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आएगा न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन, और उसको जो है वो आप इनिशिएट करें। सारे स्टेप्स जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसमें उर्दू में, इंग्लिश में वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आइए लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।